औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड सीएसएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। एस्पिरेंट्स, आप शायद थोड़े से, नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़े से बिल्कुल लाइट से नर्वस होंगे। आई नो एस्पिरेंट्स इससे ज़्यादा नर्वस नहीं हो सकते, बिकॉज़ वो अपना 100% देते हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। और मेरी ये दुआ है इंशाल्लाह ताला आप सब कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी 200 MCQs में से 66 मार्क्स इज़ इजी टारगेट। सो इंशाल्लाह ताला आप सब ज़रूर कामयाब होंगे। सो बेसिकली ये आज MPT सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मेरी ट्राई जस्ट इतनी है कि हम पाक स्टडीज़ के जो कुछ MCQs जिनमें से 3 to 5 मार्क्स आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ इंसिडेंट्स लिए हैं 1947 से 2000 के दरमियान जो इंसिडेंट हुए हैं। बाकी हम ये जो वीडियो तैयार की गई है डिफरेंट पासेस के बारे में तैयार की गई है। पासेस का सम टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट जो डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं उसमें हमने देखा, ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल 50 का नोट है तो उसके पीछे किसकी पिक्चर है। तो मैंने इस लेक्चर में वो भी स्लाइड तैयार की है, बल्कि स्लाइड मैंने क्या तैयार की है, स्क्रोलिंग करते हुए मैंने देखा मेरे पास ये डाटा मौजूद था, तो जस्ट वहाँ से मैंने डाटा लिया है, इसकी स्लाइड खुद से तैयार नहीं की। उसके अलावा इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ एंड नेशनल असम्बली कितनी सीट्स हैं, हर प्रोविंस की क्या सीट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये जानने की कोशिश करेंगे सेंसस पाकिस्तान में कब कब हुए, जनरल इलेक्शंस कब कब हुए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जिनका चांस होता है कि वो आ सकते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इस लास्ट लेक्चर में, मज़ीद टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 30th September 1947, Pakistan admitted to United Nations. 2 February 1948, when Urdu declared as the national language of the Pakistan. At that time, Urdu and Bengali, both for the languages. 1st May 1948, First Pak versus India War. 11 September 1948, Death Day of Quaid-e-Azam. 12 March 1949, when the objective resolution was passed. 18 May 1950, University of Peshawar established. 11th July 1950, Pakistan joins International Monetary Fund (IMF) and World Bank. 16 October 1951, PM लियाकत अली खान का जो इंसिडेंट हुआ। 31 December 1952, पाकिस्तान नेशनल स्काउट्स इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ। 7 August 1954, हफीज़ जलंधरी इज़ अप्रूव्ड एज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम अप्रूव हुआ। 1 January 1955, PIA starts its operations. 21 February 1956, Constituent Assembly decided to call the country Islamic Republic of Pakistan. 12 July 1959, Shukriya Niaz Ali, first women pilot of Pakistan. 27 October 1959, President General Ayub Khan becomes Field Marshal. 24 February 1960, capital of Pakistan is changed from Karachi to Islamabad. Till now it's Islamabad. 23rd March 1962, Constitution of 1962 is promulgated. 24 January 1963, Zulfikar Ali Bhutto appointed as Foreign Minister. 2 January 1965, Presidential election, minister held, Ayub Khan re-elected president. 6 September 1965, Second War, India and Pakistan. 9 July 1967, Muhtarama Fatma Jinnah died. 1 December 1967, Pakistan People's Party (PPP) is established. 20th December 1971, General Yahya hands over power to Zulfikar Ali Bhutto. So next, 1 May 1972, Labor Day is celebrated in first time in 1972. 21st February 1974, Pakistan recognized Bangladesh, which was the East Pakistan. Now Pakistan is also recognized it after 3 years. 5th July 1977, Ziaul Haq enforced martial law
and Zulfikar Ali Bhutto arrested. 15th October 1979, Dr. Abdus Salam, Pakistani scientist, is awarded as Physics Nobel Prize. 23rd March 1985, Muhammad Khan Jonejo sworn in PM. 17th August 1988, Ziaul Haq killed in a plane crash. 5th February 1990, Kashmir Solidarity Day. 24 October 1990, general election held and was reflected as PM. 13 November 1993, Farooq Laghari elected President of Pakistan. 25th April 1996, Imran Khan launched PTI. Next, 26 July 1999, Kargil War and Pak versus India. Next, 21st June 2001, Pervez Musharraf assumes office of President. Next, now we discussed about the general elections in Pakistan. First general election year is 1970, second 1977, third 1985, fourth 1988, fifth 1990, sixth 1993, seventh 1997. Eighth general election was held in 2002, ninth 2008, 10th general election were held in 2013, 11 and the most recent are held in 2018. 12 will held in 2024 inshallah ta'ala. So the next, now we will see the census in Pakistan. In Pakistan, census takes place after 10 years. सो बेसिकली अगर हम देखा जाए सेंसस या मरदमशुमारी के लिए ये जो लॉ बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हर 10 साल के बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुआ करेगी। पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम 5वें नंबर पर है, यानी कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान की हुई 1951 में, सेकंड 1961 में, थर्ड 1972, फोर्थ 1981, फिफ्थ 1998। 1998 के बाद 6 सेंसस के दरमियान ज़्यादा गैप आ गया। आई थिंक उसी को शायद कवर अप देने की कोशिश की गई है, जो 6 से 7 के दरमियान जस्ट 5 साल का गैप आया। सो फिफ्थ सेंसस 1998, 6 सेंसस 2017, 7th सेंसस 2023। Population of Pakistan according to census of 2023, 249.5 million people. Now we will discuss about the Senate. Other name of Senate is, the right answer is Upper House. Senate founded in Pakistan in 1971. After which constitution Senate firstly came into existence? So the right answer is Constitution of 1973. Senate election held after 6 years. Term the member of Senate 6 years. How many members are there in Senate? There are 100 members in Senate. First chairman Senate Habibullah Khan. In absence of president, who act as president? So the right answer is chairman Senate. Age required to the contest Senate election. So the right answer is 30 years. Now next is Provincial Assembly. Total seats in Punjab Assembly are 371. Seats in Sindh Assembly 158. General seats in Sindh Assembly 130. Women seats 26. Balochistan Assembly seats are 65. General seats in Balochistan Assembly is 51. And women seats is 11. Women seats are 11. Seats in KP Assembly 124. General 99. Women seats 22. So now the National Assembly. Other name of National Assembly is Lower House. Elections of National Assembly held after 5 years. Total seats of National Assembly 342. How many days in a year National Assembly have to meet essentially? So the right answer is 130. In 365 days, it's necessary to meet 130 days in a year. Minority seats in National Assemblies are 10. Women seats in National Assemblies are 60. Number of current National Assembly is 15th. When first Constituent Assembly formed? The right answer is 1947. First Constituent Assembly dissolved by Governor General Ghulam Muhammad. When second Constituent Assembly formed? So the right answer is 19
55. Now here is mountain passes of Pakistan. Highest pass in Pakistan is Khanjarab Pass. Next step, Broghal Pass, which connects Pakistan with Afghanistan. Dora Pass, Broghal Pass, I think, Pakistan with Afghanistan. Irshad Pass, Pakistan with Afghanistan. Khyber and Khurram Pass, Khyber, Khurram and Labkar Pass also connects the Pakistan with Afghanistan. Gomal Pass also connect the Pakistan with Afghanistan. So basically, first of all, we will know that what is passes. Basically, passes are the natural ways in the mountainous region which connects the two main regions. Next, Kilik Pass connects with the Pakistan with China. Khanjarab Pass also connect with the Pakistan with China. Mintik Pass also connected Pakistan to China. Didril Pass, KPK to Gilgit. Bolan Pass, Sibbi with Quetta. Babusar Pass, KPK with GB. Sorry. बाबूसर पास कनेक्ट करती है केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान के साथ जीबी के साथ. टोची पास वजीरिस्तान विद केपी. बशकोरो पास सवात टू जीबी वैली. नेक्स्ट क्राकर पास सवात टू बुनेर. कोहाट पास कोहाट एंड पेशावर. So the next one is Lawari Pass, Chitral with Deer. Next one is Badawi Pass, Deer to Atror and Kalam. So the next and last. Now we will discuss the pictures of bank notes. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैंक नोट्स होते हैं उन पर किस किस की पिक्चर बनी हुई है. 10 रुपीज़ नोट खैबर पास पेशावर. 20 रुपीज़ नोट मोहनजोदड़ो लाड़काना. 50 रुपीज़ नोट कराक्रम. 100 रुपीज़ नोट कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत. 500 रुपीज़ नोट बादशाही मास्क लाहौर. 1000 रुपीज़ नोट इस्लामिया कॉलेज पेशावर. एंड लास्ट वन इज़ 5000 रुपीज़ नोट फैसल मास्क इस्लामाबाद. So here it's the last lecture of our series and also the last day because tomorrow is the MPT. So best of luck to all. I hope इंशाल्लाह ताला आप सब कामयाब हो जाएंगे. So very soon अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, अमेजिंग जनरल नॉलेज के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.